Hello Matajima, and you're watching Morning Pulse on HORNBILL TV. In his first remarks after being appointed as the new Chief Secretary of Uttar Pradesh, SP Goel has laid out a clear roadmap aligning with Chief Minister Yogi Adityanath's governance vision. Addressing reporters, Goel stated that his administration would uphold zero tolerance towards crime and corruption while focusing on accelerating industrial development. He also emphasized continuity, saying he would build upon the foundational principles laid by his predecessors. Goel underscored that one of his key priorities would be pushing the state's ambitious goal of becoming a $1 trillion economy, adding that he would work towards swift implementation of both state and centrally sponsored schemes. Known for his quiet efficiency and long-standing proximity to the Chief Minister's office, Goel's elevation is seen as a strategic move to ensure policy continuity and administrative momentum. और मेरी प्राथमिकताएं माननीय मुख्यमंत्री की जो प्राथमिकताएं हैं जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, औद्योगिक विकास और मैं जो मुख्य सचिव महोदय ने एक आदर्श स्थापित किया है, उन्होंने जिस तीव्र गति से कई योजनाओं का कार्यान्वयन किया है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं भी उसी गति से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं को तीव्र गति से लागू कर पाऊं और आप सबका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप सबके सहयोग से, पूरी ब्यूरोक्रेसी के सहयोग से, फील्ड में तैनात अधिकारियों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि हम सभी योजनाओं को सफलता से क्रियान्वित कर सकें। सर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सबसे बड़ा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश। ये तो एक प्राथमिकताओं में से है। $1 ट्रिलियन का जैसे चीफ साहब ने उसे आगे बढ़ाया है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसी प्रयास से मैं भी उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थैंक यू। आपको बधाई देते हैं। The Election Commission of India has reaffirmed the reliability of electronic voting machines or EVMs following a comprehensive checking and verification exercise in Maharashtra. According to an official statement, the Chief Electoral Officer of Maharashtra completed the mandated EVM verification process as per the Commission's directive issued on June 17, 2025. This follows applications from 10 candidates seeking to verify the machines used in 2024 Maharashtra Legislative Assembly elections. The verification covered ballot units, control units and VVPATS across 10 assembly constituencies. In every case, the machines passed all diagnostic tests and no mismatch was found between the recorded votes and the VVPAT slips. The Commission stated that this outcome once again reinforces the integrity and tamper-proof nature of India's EVM system. German ambassador to India, Dr. Philipp Ackermann, has underlined the deepening synergy between India and Germany across multiple sectors, calling it the two nations' fabulous partners in a shifting global landscape. Speaking on the growing technological partnership, Dr. Ackermann said that India and German interests are very congruent, particularly in areas like semiconductor production. He noted that German companies are watching developments in India with keen interest as the country cements its status as a world leader in innovation. On the ongoing global tariff tensions included the recent 25% tariffs imposed by US President Donald Trump of India. The ambassador acknowledged that Germany and the European Union have also been impacted by such American trade policies. He emphasized the need for market stability and warned against erratic behavior that disrupts global supply chains. Dr. Ackermann called for an urgent finalization of the long-pending EU-India Free Trade Agreement, saying such a deal could be a game-changer for industries on both sides. He expressed optimism that with the upcoming EU-India summit expected early next year, a draft agreement might finally be on the table. Germany tapping into India's needs right now? So I think we join hands in many, many respects. We do common projects. We sit together and try to figure out what we can do to help each other out. I think German interests and Indian interests are in a way congruent. We want to have more share in the international semiconductor production. And therefore, I think this is a very, very good subject to sit together, to compare notes, to bring experts together and to develop common projects, and that's what's happening here right now. Are you looking at just development of fabrication plants, or is India
does ACE add chip designing? So are we looking at those fabs being set up? And what are the German companies looking for in India right now? So, you know, first of all, the German companies are setting up a company in Germany, a company in Germany, in Dresden. So that's a big step, heavily subsidized by the government. I think that's what has to happen. You know, that will also happen in India. But I think I can assure you to say that your German industries are looking very, very closely and very thoroughly at what happens in India. India is a world leader in technologies, and therefore I think it's a fabulous partner for our industries to go. How much has this tariff war has impacted the supply chains across the globe, according to you? So, I mean, we have seen many, many interruptions of the supply chain for various reasons, but I think the German government's position is very clear. We need predictability, we need stability in the markets. We don't need erratic behavior, we need a long-term strategic behavior and structure in the market. And therefore, I think it is high time that India and the European Union sit together and agree on this FTA. I think that is a game changer for many industries, including the tech industry, and I'm very confident that by the end of this year, we'll have a first draft on the table. Do you think that the way US has been announcing the higher tariff, that will somehow impact global trade as well? I mean, there is no doubt that, you know, the US tariff policy has an impact on global trade. Germany and the European Union have been affected by that also. So we have to cope with the situation, and I'm sure that the Indian government now is having a look at the situation and will cope with it. And about the India-EU FTA, any deadline where we can expect this to have a close? So I'm not a fortune teller, but what I can tell you is that we have still a couple of chapters that have to be negotiated. I would say that once the EU-India summit is setting up, and that will be early next year, I think by then we should have at least a draft agreement on the table, and I'm very confident that. Dr. Paul Rosen, project scientist for the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Mission, or NISAR, has described the Joint Earth Observation Initiative as watershed mission for science and global sustainability. In a detailed statement, Dr. Rosen highlighted the dual radar system aboard the satellite, one developed by NASA, the other by ISRO, which will together map the Earth every 12 days from two different vantage points. This capability, he said, would provide unprecedented insights into Earth's surfaces, motion ecosystem, dynamics and polar ice changes. Calling NISAR a first-of-its-kind mission, Dr. Rosen stressed the ability to function day or night and in all weather conditions, making it uniquely reliable for global applications such as disaster management, agriculture and forest monitoring. He also praised the GSLV launch that successfully placed the satellite into orbit, calling it an incredible honor to witness the event. Sure. NISAR is an amazing watershed mission with two powerful radar systems, one built by NASA, one built by ISRO, that will map the Earth every 12 days, 2 times from 2 different vantage points, giving us incredible detail on the motion of the Earth, the changes in the ecosystems, and the changes in the cryosphere. It's really the first-of-a-kind mission. And because it's radar and it measures day-night and in all weather, it provides reliable data for the global community for all kinds of applications, from disaster management, agricultural, crop health, forest management, as well as many, many scientific endeavors. It was such an incredible honor to be there yesterday at the launch and observe the amazing GSLV take our satellite into orbit. When you say this open, this data can be available? Okay, well, open data is extremely important for science. When we're looking at global problems, we need data everywhere. And the world is changing very rapidly all the time, from natural causes and from what people are doing to the Earth, agricultural monitoring, forestry, and that kind of thing. So it's extremely important that the data is available everywhere so that people can use it for these purposes that I described. So the data is available for the instrument that NASA built, the L-band radar, at the Alaska Satellite Facility through their web interface, very easy to get to,
and very easy to access the data. The data for the S-band ISRO instrument will be available at Bunidi through the ISRO portal at NRSC, the National Remote Sensing Center, and that is also freely and openly available through a similar web interface. This is going to be a watershed mission and access to everybody. It's excellent. India's ambassador to the United States, Vinay Quatta, announces a major step to expand consular access for Indian diaspora, speaking through a video shared by the Embassy of India in Washington, D.C. Quatta reveals that 8 new Indian consular application centers will open in the U.S. starting August 1, 2025. These centers will be located in Boston, Columbus, Dallas, Detroit, Addison, Orlando, Raleigh, and San Jose. An additional center in Los Angeles is also expected to open soon. Ambassador Quatta notes that these centers will significantly boost the reach and speed of consular service delivery to make services more accessible, and centers will now operate on Saturdays as well. The new initiative also includes streamlining various consular services, while some key functions will continue from the embassy. Quatta highlights the importance of people-to-people ties in strengthening the India-US partnership, with new full consulates planned for Boston and Los Angeles. The ambassador says India is further deepening its engagement with the Indian community across America. Namaskar. This message is for our friends across the United States. Today, we are very happy to announce the opening of 8 new Indian consular application centers. These new Indian consular application centers would be in Boston, Columbus, Dallas, Detroit, Addison, Orlando, Raleigh, and San Jose. In addition, we would also be opening another Indian consular application center in Los Angeles very soon. With the opening of these new Indian consular application centers, our presence to provide extensive consular services and related delivery capabilities would increase and expand significantly. Besides, it would also make the delivery of these consular services faster and more accessible to our vibrant Indian diaspora. Starting August 1, all the Indian consular application centers will also remain open on Saturdays. Clearly, this would help significantly enhance not just the availability of various consular services, but also their accessibility to our friends from the Indian diaspora. Alongside, I am also happy to share with you that we would also be streamlining various miscellaneous consular services. Most of these services would also now be made available through the Indian consular application centers. A few of the important services would, however, continue to be disbursed and made available from the embassy premises. We firmly believe that people-to-people ties are the heart of India-US partnership. With the opening of 2 new consulates in Boston and Los Angeles, which the Honorable Prime Minister of India had announced a few months ago, we would be able to further strengthen not just a relationship between our 2 countries, but also our people-to-people ties, particularly in the areas of Boston and Los Angeles. I would request our friends, our members from the Indian diaspora, to keep visiting the website of the Indian Embassy, wherein detailed information about the opening of these Indian consular application centers and the availability of various miscellaneous consular services would be made available more regularly. Thank you and namaskar. National President of National Students Union of India, NSUI, Varun Chaudhary, voices strong opposition to the company
conducting the SSC exam. He highlights that the same firm is already banned in 3 states and demands the cancellation of its tender. Chaudhary also urges Ministry of officials to meet students directly and addresses their grievances, stressing that justices must be delivered without delay. हमारी मांग है कि बच्चे कोई गुंडे डकैत नहीं है, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक मंत्रालय के मिनिस्टर इनसे मिले और बच्चों का दर्द बांटे। ये एसएससी का वो संस्था, वो कंपनी एग्जाम करा रही है जिसको ऑलरेडी 3 स्टेट में बैन कर दिया गया। तुरंत इस कंपनी से टेंडर छीना जाए। 6 तारीख को बच्चों का एग्जाम है। पूरे खाली एसएससी के बच्चे नहीं है, रेलवे के बच्चे, तमाम बच्चे हैं। बच्चे बार बार एग्जाम देते हैं और पता लगता है वो एग्जाम और सेंटर कॉम्प्रोमाइज हो गए। बच्चे पीड़ित हैं, बच्चे डकैत नहीं है। तुरंत हमारी डिमांड है कि मंत्रालय के लोग आगे इनसे मिले, बच्चों को न्याय दें। और अगर पुलिस ने एक भी बच्चे के लाठी चलाई तो सबसे पहले हम NSY के लोग लाठी खाएंगे और एक भी बच्चे को आज नहीं आने देंगे। और ये सरकार बच्चों पर लाठी चलाना बंद करे, बच्चे को न्याय दे। और ये SSC के जो लोग बैठे हैं, जो धांधली में शामिल है, तुरंत उनको हटाया जाए और इस कंपनी का ठेका छीना जाए। हमें शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन को चलने दें और मंत्री इधर आए और बच्चों की बात सुने। सर, हम टीचर्स ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं। Meanwhile, DUSU President Ronak Khatri demands complete transparency in the SSC examination process. He links the repeated paper scam to a larger failure of governance. Khatri states students and teachers protesting peacefully were forcibly removed, denied access to SSU officials and treated unfairly under heavy police presence. He asserts that the protest will continue until students' rights are protected and transparency is ensured. मेरा नाम रौनक खत्री है, मैं प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन हूँ। मांग स्पष्ट है, मांग क्लियर है। एसएससी का पेपर ट्रांसपेरेंट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस कंपनी को ये टेंडर अलॉट हुआ था, सेंटरों को पेपर कंडक्ट कराने में वो कंपनी विफल दिखी है। आज से जब इंदौर में पटवारी घोटाला हुआ था, तब भी सेम कंपनी को टेंडर हुआ था। वो कंपनी वहां से ब्लैकलिस्ट होके आई थी और उसी कंपनी को देश का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी के बाद होने वाला, उस कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। तो सरकार की विफलताएं बताती है कि जो छात्र पढ़े लिखे शिक्षा संस्थानों से निकलकर अगर एग्जाम देने जाएगा तो वहां हमें घोटाले देखने को मिलेंगे, जिसके विरोध में आज छात्र बैठे हैं। हमारी मांगे सिंपल थी, एसएससी कमीशन के सामने अपनी बात रखनी थी। वहां पुलिस को अवगत कराकर हमारे टीचरों, अध्यापकों, अध्यापिकाओं के साथ ऐसे बर्बरता के साथ उठाया गया है जैसे वे अपराधी हों। कम से कम पैनल 100+ टीचर्स का था जो जाकर मीट करना चाहता था। पीसफुली मुलाकात कोई नहीं हुई किसी से भी। आश्वासन कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दिया। आतंकवादी है क्या? देश से सवाल पूछ रहे हैं, अपनी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट से सवाल पूछ रहे हैं। आगे की रणनीति है, जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं बनेगी ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। एसएससी का जो छात्रों का हक है उनको हम लोग दिलाकर रहेंगे। The Union Cabinet has approved 4 multi-tracking railway projects covering 13 districts across 6 states: Maharashtra, Madhya Pradesh, West Bengal, Bihar, Odisha and Jharkhand. Announced Railways Minister Ashwini Vaishnav on Thursday. Addressing the media after a cabinet meeting, he said these projects will increase the existing network of Indian Railways by 574 kilometers. These projects, which are planned under the PM Gati Shakti National Master Plan, include the Itarsi-Nagpur Fort Line, Chhatrapati Sambhajinagar, Parbani doubling Alobari Road, New Jalpaiguri 3rd and 4th line, and Tongbaposi Jaroli 3rd and 4th line. The Minister of Railways said that these projects fall in line with Prime Minister Narendra Modi's vision of New India and to make the country Atmanirbhar, self-reliant. It also said that these projects will enhance connectivity to over 2,300 villages. The Union Cabinet has also decided to increase the outlay for the Pradhan Mantri Kisan Sambata Yojana, which was launched in 2017 by Rupees 1,920 crore to Rupees 6,520 crore announced Vishwa, adding that the increased funds will be used for 50 multi-product for irradiation units of 100 food testing labs. The Minister said the approval includes Rupees 1,000 crore to support setting up of 50 multi-products food irradiation units under the competent scheme, integrated cold chain and value addition infrastructure, and 100 food testing labs. मैं साथियों तीसरे फैसले पे आता हूं। इटारसी से नागपुर 4th लाइन बनाने का आज
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूवल दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। दिल्ली से चेन्नई का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है और मुंबई से हावड़ा का जो हाई डेंसिटी नेटवर्क है, इन दोनों के नेटवर्क्स के इंटरसेक्शन के पॉइंट पे ये इटारसी से नागपुर वाला सेक्शन आता है। यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ानी इसीलिए जरूरी है कि ये एक पॉइंट ऐसा है जैसे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, साउथ से नॉर्थ, सारी गाड़ियां इस सेक्शन से जाती है। अगर आप देखो बिल्कुल देश के सेंटर में आता है ये इटारसी से नागपुर का ये सेक्शन। ये ऊपर ग्वालियर से होते हुए नॉर्थ से साउथ वाली गाड़ियां आती है और इधर मनमाड़ से होते हुए ईस्ट से वेस्ट वाली गाड़ियां जाती है। ऑलरेडी इटारसी से नागपुर के बीच में डबल लाइन है, थर्ड लाइन का काम चल रहा है और अभी ये फोर्थ लाइन आज सैंक्शन हुई। फोर्थ लाइन के होने से वो एरिया पूरा डीकंजेस्ट हो जाएगा, वहां पे और ट्रैफिक फ्लो हो पाएगा और कैपेसिटी बढ़ेगी। मैं इसमें आपको स्पेसिफिकली बताता हूँ, कैपेसिटी बढ़ेगी, करीब 10 मिलियन टन एडिशनल कार्गो आएगा। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सेक्शन, इसमें 36 मेजर ब्रिजेस आ रहे हैं। इतने से सेक्शन में 297 किलोमीटर के सेक्शन में 36 मेजर स्टेशन ब्रिजेस आ रहे हैं, 415 माइनर ब्रिजेस आएंगे, 2 फ्लाईओवर है, 74 अंडरपासेस है, 4 टनल्स हैं और 2 रेल फ्लाईओवर्स। रेल ओवर रेल वाला जो रेलवे का मतलब एक ट्रैक से ऊपर से दूसरा ट्रैक जाए। और ये लॉन्ग टर्म में देश के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि इससे हर साल 1206 करोड़ रुपए की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट देश की बची। बड़े हमारे तीर्थ स्थल है जो महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, श्री सैलम ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, इन सब के कनेक्टिविटी में इसका बेनिफिट मिले। ये डिटेल में प्रोजेक्ट ओवरऑल पूरे देश के पर्सपेक्टिव से आपके सामने है। अलुआबारी से न्यू जलपाईगुड़ी थर्ड एंड फोर्थ लाइन, ये 57 किलोमीटर्स का बहुत ही स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखें प्रोजेक्ट को, ये प्रोजेक्ट हमारा, हम सब जानते हैं ये वाला हमारा स्ट्रैटेजिक एरिया है। जो ग्रीन कलर के इसमें दिखाया गया ये हमारा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजिक एरिया। अलुआबारी बिहार और बंगाल के इस सेक्शन से निकल के ऊपर सिलीगुड़ी तक जाने का ये सेक्शन, इसको स्ट्रेंथन करना देश के लिए बहुत जरूरी है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए बहुत जरूरी है और हर तरीके से, चाहे मूवमेंट ऑफ गुड्स हो, मूवमेंट ऑफ पीपल हो, मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज हो, मूवमेंट ऑफ डिफेंस फोर्सेस हो, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर में अभी ऑलरेडी डबल लाइन है, उसको थर्ड एंड फोर्थ लाइन बनाया जाएगा जिससे कि इसकी कैपेसिटी डबल हो। ऑलरेडी उसके नीचे के हिस्से में अलुआबारी से नीचे डाउन टू कटिहार ये डबल लाइन का काम ऑलरेडी मतलब थर्ड एंड फोर्थ लाइन का काम ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है। इस डबल लाइन के साथ ही साथ थर्ड एंड फोर्थ लाइन, तो ये होने से नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, ज्यादा गाड़ी चला सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए आराम होगा, सामान वहां पे ले जाना आसान होगा और वहां से वहां के प्रोडक्ट्स को बाकी सब जगह, बाकी सब स्टेट्स में पहुंचाना भी आसान होगा। अगेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, वहां पे काफी पानी वाला एरिया रहता है, लो लाइंग एरिया भी रहता है उस एरिया में। 99 ब्रिजेस हैं, 3 फ्लाईओवर्स हैं और 8 अंडरपासेस हैं और 21 मिलियन टन एडिशनल कार्गो जा पाएगा और 2 करोड़ लीटर डीजल हर साल बचेगा। 2 करोड़ लीटर्स ऑफ डीजल विल बी सेव्ड एवरी ईयर। 114 करोड़ किलोग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बचेगी, विच इज इक्विवेलेंट टू प्लांटिंग 4.5 करोड़ ट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से। Union Commerce and Industry Minister Piyush Goel on Thursday said that the central government will take all steps to protect the country's national interest, a day after US President Donald Trump announced his decision to impose 25% tariffs on India, citing New Delhi's decision to buy Russian oil and weapons. Speaking in the Lok Sabha, Goel further said that the central government is examining the implications of Trump's decision to impose 25% tariffs. He said that India and the United States had begun talks for a balanced and mutually beneficial bilateral trade agreement in March this year, with an aim to conclude the first stage of agreement by October or November this year.
माननीय पीयूष गोयल जी। माननीय अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पे चर्चा हुई है, सदन की गरिमा रखा करो। चलिए बैठिए। मैं सदन को 30 जुलाई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा 1 अगस्त 2025 से द्विपक्षीय व्यापार पर लागू होने वाले टैरिफ के विषय पर दिए गए वक्तव्य के बारे में अवगत कराना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रेसिप्रोकल टैरिफ पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत अपने व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 10% से 50% तक एडिशनल ड्यूटी लगाने की बात कही गई थी। 10% की बेसलाइन ड्यूटी 5 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। भारत पर एडिशनल ड्यूटी 10% के बेसलाइन टैरिफ सहित कुल 26% की घोषणा की गई थी। मूल रूप से फुल कंट्री स्पेसिफिक एडिशनल टैरिफ 9 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने वाला था, लेकिन इसे शुरू में 10 अप्रैल 2025 को 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया और बाद में 1 अगस्त 2025 तक और बढ़ा दिया गया। भारत और अमेरिका ने मार्च 2025 में एक न्यायपूर्ण, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA के लिए बातचीत शुरू की, जिसका लक्ष्य 2025 के फॉल यानी अक्टूबर-नवंबर 2025 तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना था। दोनों पक्षों ने 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित पहली फिजिकल मीटिंग। That's all we have for now. Keep watching HORNBILL TV. Ready? 3, 2, 1, you. And we all need a little more clarity under the details. About life, people and events that truly matter. Because sometimes news is more than mere information. From credible news organizations, credible news, and from credible and award-winning journalists.